So hi, we start second unit ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अपना इसमें पहला चैप्टर रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यूनिट 2 रहेगी है। उसके बाद माइक्रोब्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अर्लीस्ट टाइम हेल्थ मीन्स बैलेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स सर्टन फ्लूइड believed by Hippocrates in Ayurvedic system. Black bile means hot personality, tend to sick often fever. William Harvey discovered blood circulation. This approved good humor hypothesis of health using thermometer. What is the health effect by genetic disorders, infection, lifestyle? Then, what is health? A state of complete physical, mental, social well-being. What also increase economic prosperity, people and reduce infected maternal mortality rate. डिजीज दो टाइप की है, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ट्रांसमिट थ्रू वन टू अनदर। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, रिलेटिव और मोर कॉमन। नॉन इन्फेक्शन डज नॉट गेट ट्रांसमिट लाइक कैंसर। पहले अपन पढ़ेंगे इसमें कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। टेबल है पूरी, एक में डिजीज से वाला सेक्शन, फिर उसके पैथोजेंस, फिर उसके टाइप ऑफ पैथोजेंस, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और टारगेटेड साइट्स। फर्स्ट, टाइफाइड। टाइफाइड का टेस्ट करा जाता है विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट से विडाल टेस्ट से। देन मेरी मेलन थी, ये कैरियर ऑफ टाइफाइड थी। इसमें जो पैथोजन रहता है सेमिनल टाइफी और पैथोजन बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर, फूड, कंटामिनेट वाटर। सिम्टम्स सस्टेन हाई फीवर रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमेटिक हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड इंटेस्टाइन परफोरेशन। ये टारगेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड, निमोनिया। निमोनिया एक होता है स्ट्रोपोकस निमोनिया। इसमें बैक्टीरिया रहता है पैथोजन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोसोल इन्फेक्शंस। इसके सिम्टम्स रहते हैं एल्विया गेट फिल्ड विद फ्लूइड, फीवर, चिल, कफ और हेडेक। नेल और लिप्स इसमें ग्रे और ब्लूइश हो जाते हैं। और टारगेट साइट एल्विलाई इन लंग्स। एग्जाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तीन और होते हैं, फ्लैग और डिसेंट्री। कॉमन कोल्ड ये होता है राइनो वायरस से, पैथोजन वायरस रहता है और ट्रांसमिट होता है ये ड्रॉपलेट और एरोसोल कंटेमिनेट ऑब्जेक्ट। इसमें सिम्टम्स रहेंगे नेजल कंजक्शन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, लास्ट 3 to 7 days। ये अटैक करता है, टारगेट साइट रहती है नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम। एम्बोसिस, डिसेंट्री, हाउस फाइल और मैकेनिकल वेक्टर। इसका जो पैथोजन रहता है एंटोमेगा हिस्टोलिका और पैथोजन प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड, वाटर, कंटामिनेशन। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, पेन, क्रैम्प, ब्लड क्लॉट और टारगेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्कैरिसीस, एग इन फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। स्कैरिसीस कॉमन राउंड वॉर्म। पैथोजन रहता है हेलमिंथिस, ट्रांसमिटेंट फूड और वाटर कंटामिनेंट। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, फीवर, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल एलिफेंटाइसिस, वल्सरा ब्रोंकाइटिस, मलाइसिस।
hem vector, female plus mosquito, chronic inflammation of organ, lower limb, लिम्फिक वेसल, जेनेटिक ऑर्डर डिफॉर्म हो जाता है और इसमें टारगेट रहता है लिम्फेटिक वेसल, लोअर लिम्ब, रिंग वॉर्म, मॉस्किटो हेल्प टू गेट ग्रो। ये पैथोजन के नाम दिए हैं, फंगस रहती है, सॉइल कंटामिनेट ऑब्जेक्ट, ड्राई स्केलेशन ऑन स्किन, नेल्स, स्कर्ब, टॉप स्किन। इसके बाद है मलेरिया। मलेरिया 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 प्रोटोजोन डिजीज है और इसमें जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वोल्वेक्स, पल्सोजम मलेरिया, पल्सोजम फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम फेटल और मैलिग्नेट रहता है, वेक्टर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इसकी साइकिल फर्स्ट अपन मॉस्किटो बॉडीज की करेंगे, फिर उसमें ह्यूमन बॉडी, मॉस्किटोज बॉडीज। स्टार्ट करते हैं। मॉस्किटो मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को और स्पोरोफाइट रिलीज करता है। स्पोरोफाइट इनटू लिवर, रिप्रोड्यूसली asexually in liver cell, burst and release into blood, attack RBC। हीमोजोइन रिलीज, ये चिल 3 to 4 days, इसमें बहुत तेज बुखार आता है। फिर हीमोजोइन असेक्सुअल रिप्रोड्यूस इन आरबीसी, रप्चर इट, फिर गेमेटोफाइट टेक बाय मॉस्किटो, देन बाइट अनदर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, फिर फर्टिलाइज होता है ये इन मॉस्किटो गट, स्पोरोफाइट स्पोरोजोइट फ्रॉम गट्स गो टू सलाइवरी ग्लैंड, देन फिर वापस ये साइकिल रिपीट होती है। मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को, फिर उससे स्पोरोजोइट, देन स्पोरोजोइट इनटू लिवर, reproduce asexually in liver cell, burst and release into blood, attack RBC, हीमोजोइन रिलीज होता है। हीमोजोइन asexually reproduce in RBC and rupture it, gametocyte take by mosquito take in bite infected person, fertilization in mosquito gut, malarial parasite require two hosts complete their life cycle, mosquito and human, mosquito and human। Fish like Gambuser should be kept in pond to feed mosquito larva। देखो अपन ने इसका शॉर्ट, पूरा एक शॉर्ट नोट सी है, पर ये कर लोगे तो तुम्हारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। इसके बाद मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो देख लेना, और एनसीईआरटी भी नीचे मैंने अटैच कर दी है। अभी अपन ने पढ़ा हु थॉट दैट पर्सन विच ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर, ग्रीक लाइक हिपोक्रेस्ट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हु disapprove the good human hypothesis of health, William Harvey। What is used by William Harvey to demonstrate the temperature of body, thermometer। एनसीईआरटी साथ में रख लेना, फर्स्ट पेज ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी साथ में टिक करते जाना, इतनी जल्दी कोई चैप्टर कवर नहीं कराएगा। और इसमें से आप ये टेस्ट कर तुम क्वेश्चन लगा लेना, बन जाएंगे, एनसीईआरटी वैसे पूरे बनेंगे। What define health? It is defined as a state of complete physical, mental, social, and well-being. What is important to maintain good health? Balanced diet, personal hygiene, regular exercise. What is called infectious disease? Give the example. Disease is easily transmitted from one person to another. AIDS. What is non-infectious disease? Like cancer. What is pathogen? Disease cause organism. What most parasites are pathogen. Pathogen cause morphological and functional damage. What causes typhoid? Bacterial salmonella typhi. Typhoid pathogen enter which part of the body and through which food? अभी पढ़ा अपन ने, जस्ट मैंने पूरे पैराग्राफ से करवा रखे टेबल के फॉर्म में। एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, माइग्रेट टू अदर पार्ट थ्रू ब्लड। What are the symptoms of typhoid? System with high fever, weakness, headache, stomach pain, constipation, loss of appetite. Intestinal perforation that occur in which disease? Typhoid.
Typhoid fever could be confirmed by which test? Vidal test. Who is the typhoid carrier? Mary Mellon, typhoid Mary. What are the sources of infection contained food and which she prepared? What is profession of typhoid Mary? Cook. Name the bacterial cause pneumonia, Haemophilus influenza and Streptococcus pneumonia. What happen in pneumonia? Alveoli air get fluid with fluid. What are the symptoms of the pneumonia? Fever, chill, cough, headache. Lips and nails may be turning green to blues in color into which is pneumonia. Dysentery, plague, spurs are bacterial disease. Which virus causes common cold? Rhinovirus. Common cold infect which part of the body? Infection nose and respiratory passages, not lungs. Common cold for how many years? How many days? Sorry, for days बोल दिया. Years बोल दिया for a day. 3 to 7 days. Name of some disease, protozoan disease, malaria, entamoeba histolytica. Malaria is caused which species of plasmodium? Plasmodium falciparum. Name the different species of plasmodium. Plasmodium volvax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovum. Which infectious form of the plasmodium? Right. Infection malaria transferred bite of which mosquito? Female anopheles mosquito. Parasite of malaria first attack which cell? First attack liver cell, then attack RBC. The rupture of RBC associated with release of toxin is called hemozoin, which is responsible for chill and high fever. In which gland sporophyte restores? Salivary gland. Name of the two hosts are required malaria, human or mosquito vector. Entamoeba histolytica infect which part of the body? Large intestine. Which cause malaria? Amoebiasis, amoebic dysentery, Entamoeba histolytica. What are the symptoms of amoebiasis? Constipation, abdominal cramp, stool with excess of blood clot. Which ectotoxic mechanical reaction for amoebiasis? Housefly. Which parasite cause malaria? Which parasite cause ascariasis? Ascariasis lymph code. Roundworm or intestinal parasite. What are the symptoms of ascariasis? Internal bleeding, muscular pain, fever, blockage of intestinal passage. What is the source of ascariasis? Contains soil, water, plant with ascaris egg. What is the filial worm causing chronic inflammation resulting in gross deformity? Vulture bronchus malaise. Which part is affected in elephantiasis flaccid? Lymphatic vessel of lower limb. In flaccid pathogen are transmitted to healthy person to bite. Female curious mosquito. What genera of fungus are responsible for ringworm? Mycosome, Tryptophan, Epidermophyton. Which of the one of the most infection fungal disease in men? Ringworm. Which is the most infected viral disease? Common cold. Food or water, typhoid, amoebiasis, airborne disease, pneumonia, cold, common cold, infected vector, malaria, filariasis. Name the disease that feed on mosquito larva, gymnosis. Which mosquito cause disease in dengue? Aedes mosquito. Name the disease which completely irritates smallpox. Name the disease which have the control large extension, polio, pneumonia, dyspepsia, tetanus. इसके बाद इम्यूनिटी स्टार्ट होगी पर अपन एनसीईआरटी भी कर ही लेते हैं. देखो ऊपर वाला नॉन इन्फेक्शन ये तो आप पढ़ लेना, इजी है. अपन पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड से, कॉमन डिजीज से. वाइड रेंज ऑफ बिलोंगिंग बैक्टीरिया, virus, fungus, protozoa, helminthes cause disease in such skull pathogen. Most parasites are therefore pathogen cause harmful living on them. Pathogen can enter body, various multiply, therefore normal vital activities result in morphological functional damage. Pathogen are able to live within the environment of the host. Example, pathogen enter gut, no way, surviving low pH, resisting digestive enzyme. Few representing member different group of the pathogen discuss along with disease call them.
First, typhoid. Salmonella typhi pathogenic bacteria cause typhoid fever in human being. Pathogen generally enter in small intestine through food, water, contaminant within migrating to their organ through blood. System high temperature, fever, 39 to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite, and some common disease. Intense performance and date may be occur in several cases. Typhoid fever could be confirmed by Vidal test. Vidal test. सॉरी वो वाला भूल गए हैं. ठीक है, वो अटैच नहीं किया. सॉरी फॉर डेट. पर ये जो भी मैंने पढ़ा है, ये पूरा अपन ने कवर किया है. एनसीईआरटी में देख लेना तुम. इसके बाद अपनी इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं. इम्यूनिटी की एनसीईआरटी है. अब मुझे पूरा वो पीडीएफ देखना पड़ेगा. दिक्कत वो है. इम्यूनिटी. इम्यूनिटी टू प्रकार की इम्यूनिटी है. इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर इम्यूनिटी. फर्स्ट इननेट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक्वायर्ड पढ़ेंगे. फिर इसमें ये एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एलर्जी और इम्यून सिस्टम इन बॉडी. फर्स्ट इननेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं. नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट इन फॉर बर्थ कंसिस्ट फोर बैरियर. फिजिकल, स्किन, प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर, म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक हेल्पिंग ट्रैपिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. साइकोलो फिजियोलॉजिकल, एसिड इन स्टोमेटा, सलाइवा, माउथ, टीयर, आई, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. सेलुलर, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, क्लोमॉर्फोसिस, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएल, न्यूट्रोफिल. मोनोसाइट, नेचुरल किलर, माइक्रोफेज हेल्पिंग फेगोसाइटिस ऑफ माइक्रोब्स. और साइटोकाइनिन, वायरस इन्फेक्ट सेल इंटरफेरेंट नॉर्मल सेल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस. सेकेंड, एक्वायर पैथोजन स्पेसिफिक बेस्ड ऑन मेमोरी. प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इम्यूनिटी, टेक टाइम. सेकेंडरी रिस्पॉन्स इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है और क्विक. बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन टू फाइट एंटीबॉडीज. T lymphocyte do not secrete antibody but help B cell to produce it. एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. इसमें फोर पेप्टाइड चेन रहती है, टू स्मॉल और टू लार्ज, L2 और R2. L2 R2. इसकी भी एक ट्रिक है, इसमें चार रहते हैं. गैम, IgA, IgG, IgA, IgM, IgE. गेम से याद कर सकते हो. फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. टी लिम्फोसाइट मीडिएट्स CIM. CIM रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, रिप्लेस ऑर्गन. जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है तो उसमें जो रिजेक्ट करता है, यही वाली सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स ही करता है. टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग एंड इम्यून सप्रेटेंट फॉर लाइफ. एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली when encounter with microbes. Active immunity artificial or induced. Vaccination, injection microbe. Passive immunity naturally. Colostrum breeding, breast model, IgM, antibody, mother transfer to placenta. Passive immunity artificial ready-made antibodies, infection, antivenom. Vaccination. Principle of immunization is a memory of immune system. Vaccine generate memory B and T cell, perform antibodies, tetanus, antitoxin, snake bite is a passive immunization.
Vaccination, vaccination, antibody produced by body, neutral microbes and certain memory for further encounter. Inactive or dead microbes. Contain dead and weak microbes. Active artificial immunization. Recombinant DNA technology allowed to produce of antigen polypeptide pathogen bacteria or yeast. B. Hepatitis B vaccine from yeast. Then next topic, allergy. Allergy. The response of immune system certain antigen present in environment allergens. Is this a allergens? IgE type of antibody is during allergy. Symptoms of allergy: running nose, sneezing, watery eye, difficulty in breathing. Allergy is due to release of histamine, serotonin from mast cell. Drugs इसके रहते हैं एंटीहिस्टामिन्स बनते हैं, एड्रेनल्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स हैं जो रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. एग्जांपल अस्थमा, हाई फीवर. Autoimmunity due to unability to differentiate foreign and self cell. Body attack self. Arthritis, rheumatoid arthritis. Immune system in body. Lymph organ origin, maturation, proliferation of lymph occur. इसमें primary, secondary. Primary lymph organ, bone marrow, bone cell, blood cell provide produce RBC, WBC platelet. Thymus shrinking with age. Lobe shape near heart, beneath the breastbone. From immature lymphoid differentiating anti-sensitive lymphocyte provide micro environmental developing mature and T lymphocyte. Secondary lymph organ slip. Large vein shape organ, large reservoir of RBC, graveyard of RBC. Trapped blood bone marrow of organism. Lymph node, small solid structure located in different points. Trap microorganism, antigen present, active lymphocyte cause immune response. Third, tonsil, pear patches, small intestine, appendix. Provide self-interaction lymph within antigen with the proliferation of effector. Lymphoid tissue lining of major tract, respiratory, digestive, urogenital. Mild mucus associated lymph tissue 50% of the body. देन अपन इसका क्वेश्चन करेंगे. Name the type of immunity. Name the type of immunity. Innate immunity, acquired immunity. Which is non-infection present at the time of birth? Innate immunity. Name the 4 barrier method present in innate immunity. Physical barrier, psychological barrier, or cellular barrier, or cytokinin barrier. Skin or mucus coating epithelium lining of respiratory, gastrointestinal, urogenital. Which type of barrier? Physical barrier. Give the example of the psychological barrier: acid in stomach, saliva in mouth, tear from eyes, neutrophil, monocyte, natural killer, lymphoid in blood, microphage in tissue. With the example of which type of barrier? Cellular barrier. Internal, which type of barrier? Cytokinin barrier. Expanded PMNL, polymorphic nuclear leukocyte. What is interferon? Virus infect cell secrete protein interferon, which protect non-infectious cell from further viral infection. Which immunity pathogen? Acquired immunity. Acquired immunity characteristic of memory. In acquired immunity, primary response is low intensity, secondary response high intensity. Which response is called enzymatic secondary response? Which lymphocyte produces army of protein? B lymphocyte. What are the role of T lymphocyte antibody? T lymphocyte do not secrete antibody but help B lymphocyte to produce them. Which antibody produce how many peptide chain? 4 peptide chain. 2 small chain, light chain, 2 large chain, heavy chain. The response to antibody is called humoral immune response because antibody are found in blood. T lymphoid mediate which immunity? Cell mediate immunity. Which are essential before transplantation? Tissue matching, blood group matching. What take response underground transplantation throughout their life? Immune suppression agent.
What is active immunity? When host is exposed to antigen which may be form of living or dead microbes, antibody are produced in active immunity. Which immunity is slow, take time to give full response, active immunity. What is passive immunity? When ready-made antibodies are directly to protect body against antigen. Fetus receive antibody from mother through placenta. Which type of antibody? Natural passive immunity. The principle of immunization vaccination based on property of the memory of immune system. What is antitoxin? Preparing containing antibody to toxin. When person is infected with deadly microbes such as tetanus, was given to patient. Preparation containing antibody. When person is infected deadly microbes such tetanus, what give to patient? Perform antibody or anti. Hepatitis B vaccine is performed from yeast. What is allergy? Response of immune system to certain antigen present in environment. Which antibodies produce antigen against allergy? IgE. Allergy is due to release of which chemical? Histamine, serotonin from mast cell. Mast cell. Mast cell. Which drugs are used to reduce symptoms of allergy? Antihistamine, adrenaline steroids quickly reduce symptoms of allergy. What is immune disease? When someone due to genetic or other unknown reason for body attacks cell. Autoimmune disease, arthritis. Antibody are soluble protein molecule. What is lymphoid organ? Organ with origin, maturation, population, lymphoid organ. What is primary lymph organ? Give the example. Organ which where is lymphoid differentiate into antigen sensitive lymphoid, bone marrow or thymus. What is the secondary lymphoid organ? Organ where is lymphoid become effector cell. Slip-in, node, tonsil, perpetuous appendix. What is main lymphoid organ? Bone marrow, which provide microbe environment for development, maturation, T lymphocyte, bone marrow, thymus. Slip-in is large vein containing lymphoid and phagocytes. What is the reservoir of the erythrocyte? Slip. What is responsible for activation of lymph node trap antigen? Expanded malt present what percent of lymph tissue in human body? Malt 50% of the body. 50%. तो इसके ऊपर एक बार एनसीईआरटी ऊपर ऊपर दिखा देता हूँ, जो पढ़ा वही है पूरा. एक बार इम्यूनिटी एक बार पूरा चेक कर लेना. इसमें जो दिया हुआ है ये याद कर सकते हैं, गेम्स हैं. क्वेश्चन यहीं से आएंगे यार, जो पढ़ा वो पढ़ लेना अच्छे से. 50% फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता. नेक्स्ट रहेगा एड्स और कैंसर का. फिर थर्ड